Hello everyone, I'm Arima Khanam and welcome back to Balajee online classes. Today I'm here to teach you lesson number 11, that is the pipe lighter. So let's read it and understand. Read the dialogue between a father and a son. Father: Son, did you get your report card? Son: Yes, Dad, I have got it. Father: You have got it? When? Why didn't you show it to me? Son: Yesterday I forgot to show it to you. Father: You forgot? Son: Well, I was going to, but I thought this way. Does this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. How do they deal with it? Let's read the play and find out how Ernest's uncle solved the problem for him. But was it the right thing to do? तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जब आप बहुत ही गंदे मार्क्स अपने एग्जाम्स में स्कोर करते हैं एंड योर पेरेंट्स आस्क यू व्हाई डिडंट यू शो मी योर रिपोर्ट कार्ड एंड व्हाई डिडंट यू टेल मी अबाउट योर मार्क्स। तो आप कुछ ना कुछ झूठ बोल के उसे अपने आप को बचाते हैं बट आप उससे बच नहीं पाते हैं। तो चलिए हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कि अर्नेस्ट की है और देखते हैं कि उसके अंकल ने उसे कैसे बचाया था। पर आपको ये भी देखना है कि ये जो अंकल ने उसे बचाया क्या ये तरीका सही था। कैरेक्टर्स इसमें हैं अर्नेस्ट रेनाल्ड स्मिथ, a school boy of 14. So he was a school boy whose age was 14 years. Mr. Reynard Smith, his father, a self-important businessman. तो मिस्टर रेनार्ड जो थे वो अर्नेस्ट के फादर थे। अंकल टॉम, मैरी अ सर्वेंट, a boy also named Smith. तो एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है स्मिथ। The sitting room of the Reynard Smiths, it is just before 7 p.m. a few days before Christmas. Ernest is bending down over the radio, turning controls, and the set is making a terrible noise. And his father enters. तो जो रेनार्ड है, अर्नेस्ट रेनार्ड है, वो अपना रेडियो ठीक कर रहा होता है और उसमें से टेरिबल वॉइस आ रही होती है, नॉइज आ रही होती है। तभी उसके फादर एंटर करते हैं और क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, फॉर गुडनेस सेक लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट। एनी लेटर्स फॉर मी? तो वो कहता प्लीज इसे बंद करो और मुझे शांति चाहिए। क्या कोई मेरे लिए लेटर आया था? अर्नेस्ट कहता है, आई डोंट थिंक सो डैड, बट द इवनिंग पोस्ट हैजंट कम इन येट। तो वो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है डैड, पर इवनिंग पोस्ट जो आनी थी वो अभी तक नहीं आई है। फादर कंसल्टिंग हिज वॉच, वो अपनी घड़ी में देखते हुए कहते हैं, लेट अगेन, इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, मैरी टेल्स मी द टेलीफोन इज आउट ऑफ द ऑर्डर अगेन। तो वो कहता है कुछ भी सही नहीं होता है, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रेगुलर एंड ऑन टाइम। अर्नेस्ट, इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट। तो अर्नेस्ट कहता है कि क्या पता वेदर की वजह से हो ऐसा। फादर, व्हाट डू यू मीन? व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विद इट? तो वो कहता है कि इसका क्या मतलब है, वेदर और इसका क्या रिलेशन? अर्नेस्ट, आई थॉट परहैप्स द स्नो। तो वो कहता है मुझे लगा शायद स्नोफॉल की वजह से। फादर, वेल डोंट थिंक, it's probably due to carelessness or laziness, and goodness knows I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of the word work nowadays. Which reminds me, shouldn't you be doing your homework? तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वेदर की वजह से नहीं है, ये लोगों की केयरलेसनेस और लेजीनेस की वजह से है जो हर काम लेट होता है। तो आजकल कोई वर्क जो है, वर्ड वर्क का इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं। पर मुझे ये बताओ कि तुमने क्या अपना होमवर्क किया है? अर्नेस्ट, वी हैव ब्रोकन अप डैड। फादर, व्हाट ऑलरेडी? अर्नेस्ट, इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस। तो वो कहता है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं क्रिसमस को। फादर, आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून इनफ, आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन। तो वो कहता है कि मैं तब तक ऑफिस में रहूंगा। अर्नेस्ट, यस बट द बिजनेस इज डिफरेंट। फादर, सो इट सीम्स यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ सम डेज। लाइफ इजंट ऑल प्लेजर व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल।
तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, जब तुम बड़े हो जाओगे तो देखोगे कि टाइम की इम्पोर्टेंस क्या होती है, काम की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और स्कूल डेज के बाद लाइफ उतनी इजी नहीं होती है जितना तुम अभी सोच रहे हो। अर्नेस्ट, nor while you are there. Father, nonsense, my boy, nonsense. Why? My school days were the happiest time of my life. तो वो कहता है कि ये सच है कि स्कूल टाइम जो होता है, स्कूल डेज जो हैं, वो सबसे अच्छे दिन होते हैं हर इंसान की लाइफ में। अर्नेस्ट, अंकल टॉम डजंट से दैट, ही सेज ही हैड अ रॉटन टाइम। तो वो कहता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि आपका बेस्ट टाइम था स्कूल डेज का, बट अंकल टॉम तो ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरा वर्स्ट टाइम था, मेरे रॉटन डेज थे, वो रॉटन टाइम था वो। फादर, ओ डज ही इज प्रोबेबली फॉरगॉटन। तो वो कहता है कि ऐसा वो क्यों कहता है, मे बी वो भूल गया होगा, उसे याद नहीं होगा। अर्नेस्ट, he hasn't forgotten the beatings he used to get। तो अर्नेस्ट कहता है नहीं, उन्हें सब याद है, उन्हें ये भी याद है कि उन्हें कैसे टीचर्स उन्हें मारती थी। फादर, आई हैव नो डाउट ही रिचली डिजर्व्ड देम। If he would done his lessons properly and behaved himself, he wouldn't have been punished. Everybody knows that। कहता है मे बी वो भूल गया होगा, उसे याद नहीं होगा। Ernest, he hasn't forgotten the beatings he used to get। तो अर्नेस्ट कहता है नहीं, उन्हें सब याद है, उन्हें ये भी याद है कि उन्हें कैसे टीचर्स उन्हें मारती थी। फादर, I have no doubt he richly deserved them. If he would done his lessons properly and behaved himself, he wouldn't have been punished. Everybody knows that। By the way, don't you usually bring home a report at the end of the term? तो वो कहता है कि हाँ वो डिजर्व करता है, वो जो करता था उसके लिए उसे पनिश किया जाता था, सब जानते हैं। पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? अर्नेस्ट कहता है यस डैड। फादर, देन वेयर इज इट? व्हाई हैवंट आई सीन इट? तो वो कहता है कि हाँ मैंने अभी तक उसे देखा क्यों नहीं है? अर्नेस्ट, आई वॉज वेटिंग टिल आफ्टर सपर टू शो इट टू यू। तो वो कहता है खाने के बाद मैं सोच रहा था आपको दिखाऊंगा। फादर, व्हाटएवर फॉर, नो टाइम लाइक द प्रेजेंट माई बॉय, आउट विद इट and let's see what your masters say about you this time. If I remember rightly, you were pretty low in your form last summer। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जल्दी से लेके आओ और देखते हैं कि तुमने क्या स्कोर किया और तुम्हारे मास्टर क्या कहते हैं। और मुझे याद है कि लास्ट समर जो तुम्हारे एग्जाम्स में तुमने स्कोर किया था वो बहुत ही कम मार्क्स स्कोर किए थे। अर्नेस्ट, बट आई वॉज इन द सेकेंड 11 cricket team and did a lot of swimming for the school। तो वो कहता है कि मैं सेकेंड में था एंड 11 क्रिकेट टीम में था, जिसकी वजह से मैं बहुत स्विमिंग किया करता था, मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई स्कोर लेस। फादर, वेल दैट वॉज समथिंग इन योर फेवर। ऑल द सेम, I don't pay a lot of money for you to learn something, nothing but games. It's work that counts every time and don't you forget it. Now let's see the report if you haven't lost it। तो वो कहता है चलो ठीक है, it's all in your favor, और ठीक है तुम अगर गेम्स में गुड हो, but let's see your report card and see the marks। Ernest, oh no dad, here it is। Produces envelope from inside coat pocket। Father, not too clean. However, cuts envelope with pocket knife, takes out report, unfolds it and began to read aloud. Scripture, making steady progress. CR. Who's CR? Ernest. Mr. Reed. He takes us for scripture and maths। So, he says कि CR कौन है? तो वो कहते हैं कि मिस्टर रीड, और वो हमें स्क्रिप्चर और मैथ्स पढ़ाते हैं। फादर, अ क्वीर कॉम्बिनेशन। तो वो कहता है बहुत स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है ये कि वो स्क्रिप्चर पढ़ाते हैं और आपको मैथ्स भी कराते हैं। एंड येट आई डोंट नो, आई सपोज देयर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अरिथमेटिक इन द बाइबल एंड प्रेयर बुक। English composition shows originality that might mean anything। Grammar, good, careful work, reading, good, writing, very fair, spelling, improving।
Thank heaven for that. The letters you wrote me when I was abroad were full of mistakes. तो वो कहता है चलो ठीक है, you have started writing well, क्योंकि जो तुमने मेरे लिए लेटर लिखा था that was horrible and I couldn't read it. History, promising. Geography, good. Civics, what are they? Honest, it's new subject, Dad. The head takes us in that. तो वो कहता है कि ये सब न्यू सब्जेक्ट्स हैं और हमें हेड्स ये इसके बारे में बताते हैं. फादर, yes, but what's it all about? Honest, oh, everyday news and politics and that sort of thing. वो कहता है कि ये सिर्फ न्यूज़ और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. The old man sometimes calls it current affairs. तो old man जो है वहाँ के वो इसे current affairs कहते हैं. Father, does he? It seems to me you can't get all that from the newspaper. However, he says, here you take an intelligent interest. So I suppose we must be thankful for small mercies. What's next? Oh, Latin. Not much use for it myself, nor have you. It seems only fair, your report says. तो वो कहता है ठीक है, तुमने एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं and it's all fine. Honest, but father, no need to apologize. It's deed language. Anyhow, no commercial value, whatever, cut it out. तो वो कहता है हाँ, लैंग्वेज पे कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, no commercial values, whatever, cut it out, just boycott it. Honest, I can't till I am in the 5th. मैं इसे नहीं ऐसे इग्नोर कर सकता हूँ जब तक मैं 5th में नहीं जाऊँगा. Father, pity. You might be doing something more useful. Still, I recognize the school must provide for all tastes. What's this now? Oh, mathematics. I'm glad that put arithmetic first. Good heavens. You have actually got highly satisfactory. I thought you were a fool at the subject. तो वो कहता है कि मैथ्स में तुमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, मुझे तो लगता था you are fool at that subject. Earnest, surprised. वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है. So did I. It must be a mistake, I mean. तो वो कहता है क्या सच में अच्छा स्कोर किया है मैंने, मुझे तो लगता है ये गलती होगी. Father, well, your master ought to know. I can't imagine he would give you praise for doing well in if you hadn't. तो वो कहता है कि हाँ, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे मास्टर को पता होगा कि ये सच है कि नहीं, क्योंकि अगर तुमने किया है तो उन्होंने तुम्हें ये रिमार्क दिए हैं. Ernest, no, but father, your algebra and geometry are not so bad either. I am beginning to think you have changed for the better. तो वो कहता है कि ज्योमेट्री और algebra में भी तुमने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो you are changing yourself. Ernest, what have they given me for both? Not it matters all the much. Any fool can draw and use a screwdriver. So he said कि हाँ, इसमें तुमने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, कोई भी फूल इसमें अच्छा कर सकता है, but you didn't do it good. Ernest, but I am the best in the form of drawing and I have done awfully well at woodwork this time. तो वो कहता है कि मैं बेस्ट हूँ woodwork में और मुझे उसमें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स उसमें डिसअपॉइंटिंग है? Father, well, here it is in the black and white. You can't go beyond the marks 40% in art and 39 in woodwork. So he said, see, you can see your marks. You have got only 40% in art and 39% in woodwork. Ernest, he was puzzled. He was confused. It beats me. Father, why worry? It's the commercial subject that count. As a matter of fact, I am quite pleased with this report. It shows you are beginning to understand your duty. Here's half a crown for you and don't spend it wastefully. तो वो कहता है कि तुमने इस बार better किया है and I'm satisfied. Ernest, thank you, Dad. Takes coin just as the door opens to admit Uncle Tom. तो वो दरवाजे के पास जाता है और उसके अंकल आते हैं. Uncle, good evening. I hope I'm not too early. Father, you are just in time to see Ernest's report. Sit down and take a look at that. I bet you never got one like it. Uncle, I wondered why you were throwing half crowns about. Takes report, sits in the armchair, puts on his spectacles and looks quickly down the paper. Father, well,
Uncle, you are right. By Jove, I never did. Seems to me, young man, you have turned into a bookworm. What's happened to you? तो अंकल टॉम कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा किया है. क्या तुम बुकवर्म बन गए हो, जिसे हम कहते हैं किताबी कीड़ा? क्या तुम इतना अच्छा पढ़ने लगे हो that you have scored so well? Ernest, uncomfortably. Don't know, I am sure, uncle. तो वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसको कितने अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं और उसके जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें उसको मार्क्स इतने लो क्यों मिले हैं. फादर, he's began to realize the value of work, I hope. Looks at the watch. Look here, you must excuse us a few minutes. Thomas, I want Ernest to help me get some letters off and the post goes at 7:15. तो फादर जो होते हैं अर्नेस्ट को थोड़ी देर के लिए अंदर ले जाते हैं कुछ काम के लिए और अंकल को कहते हैं कि तुम जब तक रिपोर्ट कार्ड देखो. अंकल, दैट्स ऑल राइट, डोंट माइंड. तो वो कहते हैं इट्स ओके, यू कैन टेक हिम. Father, help yourself to cigarette, point to box on the table. Come on, my boy, we must hurry. तो वो अपने बेटे को लेके अर्नेस्ट को अंदर जाते हैं. Goes out followed by Ernest. Uncle takes a cigarette, lights it and then examines report again. Whistling from time to time in surprise, enter Mary, showing in a schoolboy who wears glasses. He's about Ernest's age. मैरी जो है वो अर्नेस्ट की एज में है. वो अंदर आती है, देखती है कि अर्नेस्ट के अंकल जो टॉम है वो चेयर पे बैठते हैं एंड ही टेक्स अ सिगरेट एंड स्टार्ट सीइंग द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अर्नेस्ट. मैरी, आई एम सॉरी सर, आई थॉट द मास्टर वाज हियर. मैरी अंदर आ जाता है और वो उसको सॉरी कहता है, टॉम को कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर मास्टर है. अंकल, ही इज़ वेरी बिजी जस्ट नाउ. मैरी, एनीथिंग आई कैन डू? मैरी, आई डोंट नो सर, दिस यंग जेंटलमैन सेड ही वांटेड टू सी मिस्टर रेनार्ड स्मिथ और मास्टर अर्नेस्ट. एक लोग आए थे, वो कह रहे थे मुझे मिस्टर रेनार्ड स्मिथ से मिलना है या मास्टर अर्नेस्ट से. अंकल, ऑल राइट मैरी, इफ़ आई कांट हेल्प आई विल कीप हिम company till your master returns. Mary, thank you sir. She goes out. So Mary goes out. Boy, excuse me, but are you? Uncle, I am Ernest, uncle, if that's what you want to know. But sit down and tell me if I can be of any use. तो अंकल टॉम कहते हैं कि हाँ बैठो और मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ. तो वो बॉय कहता है कि मेरा नाम अर्नेस्ट है और मुझे आपको ये बताना था. वेल यू सी, इट्स अबाउट माई स्कूल रिपोर्ट. वी थिंक देयर्स बीन सम मिस्टेक. तो वो कहता है कि मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ आपसे बात करनी है. मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है, हमारे रिपोर्ट कार्ड एक्सचेंज हो गए हैं. अंकल, डियर मी, हाउ डिड दैट हैपन? तो वो कहता है वो कैसे हुआ? बॉय, सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट. यू सी, इट्स लाइक दिस. माई नेम इज एडवर्ड रॉगर Smith and I am in the same form as Ernest Reynard Smith. Only I am plain Smith and he is hyphenated. So he said I am plain Smith and he has a hyphen in between. Uncle, he's what? Boy, you know that he's got a dash between Reynard and Smith. So he said there is a hyphen in between, that is a dash. So that's the difference in our name. Uncle, I see. Go on. Boy, well, old Jonah, that's our. It's like this. My name is Edward Roger Smith and I am in the same form as Ernest Reynard Smith. Only I am plain Smith and he is hyphenated. So he said I am plain Smith and he has a hyphen in between. Uncle, he's what? Boy, you know that he's got a dash between Reynard and Smith. So he said there is a hyphen in between, that is a dash. So that's the difference in our name. Uncle, I see. Go on. Boy, well, old Jonah, that's our form master, never troubles to put our full names on report. Only ERS. You see, so he is very likely mixed up. I hope so anyhow. तो वो कहता है कि जो हमारे टीचर है वो अक्सर हमारा पूरा नाम नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ ERS लिखते हैं दोनों में. तो इस मिस्टेक की वजह से
ये रिपोर्ट कार्ड जो मेरा है वो आपके घर आ गया और आपका मेरे पास आ गया है. Uncle, why is your report so very bad? Boy, it can't be mine. That's just what I am saying. तो वो कहता है, टॉम कहते हैं कि क्या तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बहुत गंदा है? तो अर्नेस्ट जो बॉय आया है मिलने के लिए वो कहता है, हाँ मैं यही सोच रहा था, जो रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है वो इतना खराब नहीं हो सकता है. I study well. Uncle, well, the one that was sent to you, whoever it belonged to. Boy, bitterly, it was bad enough for Dad to say he would cut my pocket money for a month. तो वो कहता है ये रिपोर्ट कार्ड मेरा नहीं हो सकता है, अगर मैं ये रिपोर्ट कार्ड अपने डैड को दिखाऊंगा ऑब्वियसली वो मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगे. अंकल, दैट्स बैड लक. Well, I shouldn't be surprised if you are right about your getting mixed up with young Ernest. Suppose you show me yours and take a look at this, the exchange report card. So he shows the report card to the boy Ernest. Boy, looking quickly at the paper given to him, this is mine, I am sure for it. तो वो कहता है, जैसे ही वो रिपोर्ट कार्ड देखता है वो कहता है ये मेरा है and I am very sure about it. Uncle, what makes you think so? Boy, look, I have done pretty well in everything except art and woodwork, and those are the only subject Reynard Smith is good at. तो वो कहता है आप देख सकते हैं मैंने हर सब्जेक्ट में अच्छा किया है, सिर्फ आर्ट और वुडवर्क में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं बिकॉज आई एम वेरी पुअर इन दैट. और जो रेनार्ड स्मिथ है वो बहुत अच्छा करता है आर्ट और वुडवर्क में एंड ही शुड गेट गुड मार्क्स इन दैट. तो ऑब्वियसली दिस रिपोर्ट कार्ड इज माइन. Uncle, I shouldn't wonder if you are right. Looks at paper. Yes, I am afraid you are right. Well, there's only one thing for it. We must change them over. तो वो कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो, तो हमें इसे चेंज करना चाहिए. बॉय, डू यू मीन आई कैन कीप दिस? तो वो कहता है कि क्या मैं इसे रख सकता हूँ? अंकल, ऑफ कोर्स, इट्स क्लियरली योर्स. तो कहता है ऑफ कोर्स तुम इसे रख सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा है. बॉय, pocketing report, thank you sir, pauses awkwardly. I'm sorry if Renard Smith's going to be disappointed, but you don't know my father. तो वो कहता है I'm sorry अगर रेनार्ड इसके लिए रेनार्ड जो मतलब अर्नेस्ट है वो अगर मतलब he'll be disappointed, तो I can't do anything because मैं अगर ये रिपोर्ट कार्ड अपने फादर को दिखाऊंगा तो मेरी पॉकेट मनी बंद हो जाएगी. अंकल, no, but I am earnest. However, I believe the boy suspects something already and you can leave this his father to me. तो कहता है कोई बात नहीं, you can take your report card और मैं यहाँ पर बात कर लूँगा. Boy, thank you sir, good night sir. So वो वहाँ से चला जाता है. Uncle, good night my boy, your pocket money ought to be saved now. तो वो कहता है good night बेटा, अब आपकी पॉकेट मनी जो है वो कट नहीं होगी और आपकी पॉकेट मनी बच गई. Boy, I hope so, sir. He goes out. Uncle takes up remaining report card and examines it again. Then, shaking his head, he folds it carefully into a pipe lighter, which he lays on the table, his cigarette now smoked through. He throws it on the fire and fills a pipe. He has just finished and puts the pipe in his mouth when Ernest enters with a pipe envelope in his hand. Ernest, anything for the post, uncle? तो अर्नेस्ट जब आता है तो देखता है कि अंकल ने उसे रोल करके एक पाइप लाइटर बना दिया है और अर्नेस्ट पूछता है कि कोई पोस्ट है अंकल? अंकल, नो थैंक्स माय बॉय, आई रियरली राइट लेटर्स. तो वो कहता है कि नो बेटा, आई डोंट राइट लेटर्स, सो देयर इज नो पोस्ट. ही टेक्स द रिपोर्ट, पुशेस इट इन द फायर एंड स्टार्ट्स लाइटिंग हिज पाइप. तो वो उसे रोल करके एज अ पाइप लाइटर यूज करने लगता है. अर्नेस्ट सडनली नोटिसिंग व्हाट हिज अंकल इज डूइंग. अर्नेस्ट सडनली देखता है कि उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक पाइप लाइटर बना दिया गया है और अंकल उसे स्मोक करने जा रहे हैं. Here's what are you doing? वो बहुत शॉक हो जाता है. वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं? अंकल, pretending surprise, only saving matches. What's the matter? Ernest, but that's my report. Uncle, looking down at the burning paper in his hand. Heavens, so it is, or was. I must be getting absent-minded in my old age. Well, it's no good now, I'm afraid. Throws it on the fire. तो वो कहता है कि ये तुम्हारा था, अब नहीं है, अब ये जल चुका है और वैसे भी इस रिपोर्ट का कोई फायदा नहीं है. Ernest, you won't have get into trouble when dad comes.
तो वो जानते हो कि आप जानते हैं कि हम कितने ट्रबल में आ जाएंगे अगर डैड ने देखा कि रिपोर्ट कार्ड ऐसे जल रहा है. अंकल, नेवर माइंड, आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर. आफ्टर ऑल, एक्सीडेंट्स विल हैपन. लुकिंग एट द क्लॉक एट द mantelpiece, I say, isn't it really post time? Help, I would forgotten I had forgotten all about the post. I must rush. He hurries to the door. तो वो वहां से भाग जाता है. Uncle, by the way. Ernest, yes, uncle. Uncle, I shouldn't be too long spending that half crown. If I were you, your father might want it back. तुम्हारे फादर को चाहिए होगा वो रिपोर्ट कार्ड जो कि कोई यूज का नहीं था, बट अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उसे ऐसे ही जला देता. Ernest, he hasn't got a hope. He hurries out and the curtain falls. So that's it. You must have understood how Mr. Tom has saved Ernest. बट उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अर्नेस्ट का रिपोर्ट कार्ड उसके फादर ने ऑलरेडी देख लिया था. सो दिस हैपेंस व्हेन यू आर एब्सेंट माइंडेड. एंड what else in the lesson? That's it. Please download the exercises from School Mitra and start doing it in your fair copies. Do read the lesson before you start doing it in your copies and books. Take care of yourself and wait for my next video. Bye bye.